इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। अच्छा Prajakta, I saw a video 5 years ago on your YouTube channel called I Saw a Ghost. तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है यार? यार वो तो वहाँ वो भी बहुत अजीब था उस टाइम पे ना। सुदीप करके जो हम साथ काम करते थे, वो ना एक हॉरर शो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के साथ शूट कर रहा था। उसके पहला एपिसोड शूट करने के लिए आई थिंक वो वसई फोर्ट में गए थे जो भी हॉन्टेड है, और वहाँ से वो वापस आया। मैंने कहा क्या हुआ, कुछ दिखा? करे नहीं, कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं था यार। एक जगह हम गए, वहाँ बस टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो गया, पर वहाँ पे एक वेल थी तो हमें लगा पानी की वजह से जो है, कहीं पे कुछ नहीं। तो ये लाइक फोटोज़ हैं, सो उस फोटोज़ का उन्होंने डेस्क वगैरह बनाए हुए थे। तो मैं उसके फ़ोन में वो फ़ोटो देख रही हूँ, एंड देयर इज़ अ चर्च देयर इन दैट विसिनिटी। और वो चर्च के आर्च के सामने आई कैन सी अ वेरी क्लियरली सी अ वाइट फ्लोटिंग फिगर which it in the picture, which looks like it's a robe or something long. You can't see feet or anything, but you can see a very clear figure. But Sudeep In the bola, air. yeah, it's in like you don't Floating. see feet Okay. in that picture. So man, Sudeep ko bola, I said, have you seen this? And he's like, what? And there was a whole group of people who had gone. और सब ने मतलब सो दे सॉ अदर पिक्चर्स, कहीं पे नहीं। दे मेड अ डेक विद दैट, शायद किसी ब्रांड के साथ था। दे मेड अ डेक जहाँ पे वो पिक्चर सुदीप के फोन से निकल के वहाँ गई हुई थी। उस डेक पे भी वो नहीं था, एंड इट वाज ओनली ऑन हिज फोन, Which you saw. which I saw, which everybody saw then on that photo, and then he deleted that photo. मैंने कहा तू इसको निकाल पहले। and then that's it, like it was just weird कि same file है, पर वो डेक पे it looks like just the arch, and in the phone you can see. I went to Bali a few months back and I went with my entire family. And हम लोगों के पास ना ऐसे we had 2 villas because we were a lot of people, right? There's one villa where all the kids, all the youngsters were there, and one where all the moms and dads and everybody was there. तो पहले कुछ दिन हम लोग यहाँ थे, फिर ये लोग जाने वाले थे, तो हम लोग इस विला में थे। और इवनिंग में कुछ वो लोग अपनी बैलनीज पूजा कर रहे थे, some prayers offering and all of that. So my Jiju, he clicked a picture with these Balinese girls who were doing the puja because it was looking really beautiful, you know, in Yeah, the the Balinese dress attire, up the in their dress up whole, and all yeah. that. वो हो गया. Cut to next day, we hear my Taiji. She fell in the pond in the other villa. Cut to next day, somebody else got hurt on their elbow. Then my niece, who's 6, got like severe allergy. Cut to next day, one of my nephews was sick as hell. IV चढ़ाने, ड्रिप चढ़ाने लोग डॉक्टर्स वगैरह को बुलाना पड़ा। अब ये सब हो गया और वो लास्ट रात थी वहाँ की। And my Jiju went up to his room. He opened his phone essay generally to see all the pictures that he had taken. That picture of those 2 Balinese women suddenly in that device had 2 Dracula teeth coming out. If that was the case, why would they take the picture in the first place? No, but You also understand? when he saw these, they didn't have those teeth. No, right, that's what I'm saying, that there was something so Creepy. often creepy, because if had it been like that, he would not have taken that Taken a picture, picture. it's No, scary, yeah. proof is that he found them looking really lovely, Balinese attire, very typically Culture, traditional yeah. culture, all of that. Suddenly, that very image had. वो डिलीट कर दिया पिक्चर के नहीं? वो immediately, like, I don't fucking want it on my phone. He deleted the picture. He deleted from the deleted items. And then भाड़ में जाओ. फिर सब लोग Picture ठीक हो deleted. गए? नहीं, ठीक क्या, अगले दिन तो हम आ ही गए थे, तो हम यहाँ आ गए थे तो ठीक हो गए, वहाँ रुकते तो पता नहीं और क्या क्या कहर मच था। बाप रे।